screw up हो गया मेरे से. I didn't fill up fuel and I have very less fuel left. This lovely sweatshirt I'm wearing, this is actually gifted. And Karma ji is here with his amazing heritage. This is the bike I want to show you, जो उसके sexy DP में है. And this is Karma ji wearing the sexiest outfit. अंधेरी रातों में. Lovely man, lovely. What a piece, what a machine. हम जा रहे हैं Songmo Lake, but उसके पहले I am going to have some breakfast with Karma ji. उसके बाद हम जाएंगे. So that's the plan. Rims. You just crossed. What? It's upper. You sure? Yeah. Collect your pass, huh? What I need to take is here. This is my friend. Yes, hello. My what to say? Best friend actually, very good friend Oh, of mine. nice. He's Ramesh Sarda. Oh, he's going to be father-in-law. He still wants to be young. No, father, I'm going to be a Grandfather. He's already a grandfather. He doesn't. He looks like a grandson, but. He has a shop out here. Nice. Sports goods shop. Oh, nice. Hey, breakfast कहाँ पाउँछ राम्रो? Breakfast क्याफे खोल्छ? लक्ष्मी स्ट्रिटहरु मात्र खोल्छ होला. के खान्छन् ब्रो? ब्रेड मगाइदिनु अन्डा मगाइदिनु पैसा खाइदिनु. ACL is subtitle. What is he saying? Can you give us subtitles? What are you saying? He's saying, what do you want to take breakfast outside? You come to my shop, I'll buy you a loaf of bread and order some tea and then we'll have breakfast. So no need of subtitles. Karma ji ने subtitle डाल दिया. And this is the famous MG market. आपको already बता चुका हूँ. Fantastic. Looking for a breakfast spot. This belongs to us, no? Complex. This one, Simcha. No, The whole complex. we are 6 brothers actually. Wow. बड़े लोग. नहीं है. After some coffee and catching up, कर्मा के हेरिटेज के बैक साइड को देख कर मैं चेक पॉइंट की ओर चला, जो मेन सिटी से कुछ 20 से 25 मिनट की दूरी पे है और जहाँ पुलिस मेरा इंतजार कर रही है. Thankfully for all the right reasons. I'll take a jacket from here. सर कहाँ से? हम तो यहीं से बॉम्बे से आए. मुंबई से? हाँ. आपके साथ जाएगा ऊपर. ओके. हो गया आपका पासिंग? पासिंग से मैं गया है. Okay. Awesome. Thank you so much. I'll come back. Yeah. Right, okay. Just be careful of black eyes. Say bye. I'll see you again. By the way, सब हो गया. Bye. Permit सब हो गया. I'm gonna see him back in a while. So that's it. Let's see how the ride is now, man. He's given me his jacket. Very sweet of him. So I Don't forget. Okay, take the left. After 2 kilometers or something. Correct. Right road on the left. Okay. पेपरवर्क सबमिट करके आई स्ट्रैप्ड ऑन कर्मास जैकेट, क्योंकि हार्ली और लेदर जैकेट का रिश्ता आलू पराठे और अचार के जैसा है. दे आर इनकम्प्लीट विदाउट ईच अदर. बाय द वे, अगर आपको दुनिया के सबसे बेस्ट आलू पराठा और अचार एक्सपीरियंस करना है, क्लिक ऑन द लिंक अबव. Thank you, sir. Alright, let's do this. I did not forget to take the left. Songmo Lake is around 50 kilometers from Gangtok city and the roads are smoother than Anand Ambani's moves. यहाँ बॉर्डर फोर्स रोड्स मेंटेन करते हैं एंड एज मोस्ट ऑफ यू माइट ऑलरेडी नो, पूरे देश में सिर्फ यही है जो रोड ढंग से बनाते हैं और मेंटेन भी करते हैं. और बॉर्डर फोर्स में से अगर ये कोई देख रहा है, भाई महाराष्ट्र में आपकी अर्जेंटली जरूरत है. क्विक साइड नोट, इस रीजन में 0 फोन नेटवर्क है, सो इफ यू थिंक यहाँ चलते चलते यू कैन चैट विद योर गर्लफ्रेंड, योर वाइफ और बोथ, वो नहीं होने वाला. So amazing, dude. Like shit. अब कहाँ से हो आप लोग? अरे सही है. मैं बिहार से हूँ, वैसे मैं राजकोट में रहता हूँ. अरे सुपर. क्या कितने दिन हुआ है आप यहाँ पे तो मैं 3 तारीख से हूँ. 3 तारीख से हो? मैं तो कल ही आया हूँ. नाइस सुपर. कैसा है, मतलब ये आपने देखा है क्या पहली बार देख रहे हो? पहली बार देख रहा हूँ. सही है. हम भी पहली बार देख रहे हैं. नाइस टू मीट यू. बाय.
Most of the buildings you see here are homes of the border force or of the local shop or stall owners. इस पूरे एरिया में सिक्योरिटी काफी टाइट है and I even saw snipers and mortar units on the way. और मैंने सुना है जो mortar units है ना KTMs को देखते ही bombs उड़ा देते हैं. I swear, मजाक नहीं करो. By the way, in case you're wondering, the best time to visit, at least by road, is May to October, where the weather is around 10 to 15 degrees. But like me, if you prefer potentially dying of frostbite, तो आ जाओ December में. चलते चलते आई रियलाइज की गाड़ी में पेट्रोल कम था. ओ भाई साहब सुनो ना, इधर आओ. इधर पेट्रोल भरने का कोई जगह है क्या? नहीं है. तो बंद होएगा तो धक्का मारने का. पेट्रोल का जगह नहीं है. कौन सा बाइक है ये? हार्ली है, हार्ली. इसके आगे नथुला पास है ना. चलो भाई. All the plan was to refuel on the way. मैंने जल्दी रियलाइज किया that plan was flawed. एक सोच रहा हूँ एक डिप ले लूँ अंदर जाके. एंड एक बहुत बड़ा मैसिव स्क्रू अप हो गया मेरे से. आई डिडंट फिल अप फ्यूल एंड आई हैव वेरी लेस फ्यूल लेफ्ट. आई थिंक लाइक हाउ मच. यप, दैट्स हाउ मच आई हैव लेफ्ट. लाइक अनदर 150 का रेंज बता रहा है मुझे. एंड लेट्स सी इफ द लास्ट शुड लास्ट. शुड गिव मी 150 रेंज इज 50 किलोमीटर्स बैक. माइलेज थोड़ा कम दे रहा है ऊपर मेरे को, बट लेट्स सी. आई डोंट नो, मे बी आई शुड रीच. अब बंद हो गया तो धक्का मारना पड़ेगा. और बाजू में जो यॉर्क है उस पर बैठ के जाऊँगा मैं. जो यॉर्क है ना, आपने देखा, उस पर बैठ के जाऊँगा मैं. इस पूरे स्ट्रेच पे पेट्रोल पंप नहीं था फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. अरे किसके लिए बचाना है एनवायरमेंट? इन बच्चों के लिए जिनके लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है. एनीवे, फिलहाल ऑल आई वांट टू डू वाज टेक इन दिस गॉर्जियस व्यू एंड द लेक वाज नॉट टू बैड टू. फाइनली मेड इट टू सिक्किम ब्रो. सिक्किम. बोलने से भी नहीं होता है. पेट्रोल खत्म हो गया तो कुछ ऑप्शन नहीं है. ऑप्शन नहीं है. ऑप्शन क्या है? गाड़ी रिजर्व करो. हाँ. और बाइक भी गाड़ी में डालो, आदमी भी गाड़ी में. अच्छा ऐसा. ओके, फिंगर्स क्रॉस्ड. आई एम होपिंग आई रीच. थैंक यू आंटी. कॉफ़ी बहुत मस्त है. मज़ा आ गया. हाथ काँप रहा था बहुत. बहुत काँप रहा था. आई एम वेयरिंग दीज ग्लव्स बट completely useless. ये एक्चुअली समर ग्लव्स है. ये बॉम्बे में समर में पहनता हूँ मैं. तो फ्लीस लाइनर लिया था मैंने ये, बट डजंट हेल्प टू मच. कितना टेम्परेचर, तापमान क्या रहेगा इधर आंटी? तो बहुत ज़्यादा रहेगा. 4-5. हाँ. 4-5 में समर ग्लव्स मैं चला रहा हूँ. सो लिटरली फील लाइक माई फिंगर्स आर फॉलिंग ऑफ. says 2:21 बट एक्चुअली क्या टाइम हुआ आंटी? 11 बजने में 10 मिनट. 11:50 हुआ है, बट इट्स शोइंग 2:20. बेसिकली चाइना का टाइम बता रहा है हमको यहाँ पर. ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू चाइना बॉर्डर. हाँ, चाइना का टाइम. तो मेरा फ़ोन ऑटोमेटिकली चेंज हो गया. वही मैं सोच रहा था कि इतना टाइम से तो नहीं चला रहा था. I had around 150 kilometers का range and the total journey to and fro was 100 kilometers. Too cut, especially in the middle of nowhere and especially where there are no petrol pumps. Anyway, मुझे आज तक ना किसी चीज़ ने रोका है और ना मैं किसी चीज़ को मुझे रोकने दूंगा. Unless it's like altitude sickness or something. Because as I ride into the mountains, altitude का असर होने लगता है. गैंगटॉक अगर 1650 मीटर अबव सी लेवल है तो स्ट्रॉन्गमो और नथुला पास ऑलमोस्ट 4000 मीटर अबव सी लेवल है. और देखते ही देखते थोड़ा सा लाइट हेडेड वाला फीलिंग आ जाता है. कुछ 2-3 घंटे के बाद ठंड में कांपते हुए आई फाइनली मेड इट टू नथुला पास, अनदर बॉर्डर कॉन्कर्ड बाय द फैट बॉय. जो फीलिंग मैं फील कर रहा हूँ इज इनडिस्क्राइबेबल. Now all I had to do was walk to the Indochina gate, which was way up there. A few moments later. By the way, if you're not really the fit types, you might face breathing difficulties and or nausea, मतलब वो उल्टी वाली feeling. The same feeling you might get after watching this. और मैं अंडा है. क्या अंडा है? हमें पूरा अंडा मैं नहीं दिख. I would recommend either popping an altitude sickness tablet, जो कोई भी pharmacy में मिल जाता है, and or carrying a portable oxygen tank to be on the safer side.
as it is in most of these places, filming is prohibited near the border. But basically अगर आपको जानना ही है तो the view is of the India and China gate, जहाँ Chinese soldiers हमें घूरते हैं और Indian soldiers उनको घूरते हैं. यहाँ soldiers are always on edge और अगर आप extra smart बनकर चुप चुप के फोटोज निकालोगे तो आपका फोन कॉन्फिस्केट हो जाएगा. So don't do that. यहाँ the vibe was sick AF and the people too. Honestly at this point altitude की वजह से मेरा खुद का सर घूम रहा था. I guess this is why it's called Sikkim. करो So was the trip here worth it? Well, to be honest, Nathula Pass से ज़्यादा मैंने यहाँ आने वाले रोड को एंजॉय किया. The location itself is okay, not so bad. इतना कुछ खास नहीं लगा मुझे. On the other hand, Shangmo Lake was gorgeous. मतलब पहाड़ों के बीच एक beautiful turquoise green clear water body. It cannot get any better than that. On the way back, suddenly fog जमा हो रहा था. This was a sign of snowfall which I was told was expected today. यहाँ पर snowfall होना on my fat boy would mean absolute disaster. I had to get back anyhow. ऊपर से मेरा petrol indicator was showing me a range of 60 kilometers with 50 kilometers to go. But unlike most humans, the fat boy will never let you down. I made it back. Evenings in Zostel is all about socializing with the people you met, sharing stories and playing a lot of Uno. तो इसको आंटी कुछ बोला उसको. क्या बदतमीजी? क्या बदतमीजी है? मैं आंटी दिख रही हूँ? नहीं है तू. नहीं है. वो टेडी बेयर लगे. तू टेडी बोला बट तेरे एक्सेंट से टिटी बेयर लगा मेरे को. टेडी नहीं टेडी. So do you know the secret? वेस्ट बंगाल कोलकाता. वेस्ट बंगाल. Where are you from? झारखंड रांची. सिंगरौली MP. से जोर से बोल थोड़ा. सिंगरौली MP. सिंगरौली. सिंगरौली. मुझे नहीं पता भाई. तुमको पता है कहाँ पर है? रीवा के पास. रीवा के पास. हाँ रीवा मुझे पता है. रीवा पता है. रीवा से. वो थोड़ी देर पहले. बैंगलोर से कर्नाटक. वो हमारा सीक्रेट. वही ना MG रोड से ऑटो जाता है ना. हाँ वही. बेसिकली एक टेबल पे हम मल्टीपल स्टेट्स के लोग बैठे हैं. हम चिल कर रहे हैं. इट्स द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड गाइस. द बेस्ट है ना. क्या बोल रहे हैं? इज इट अमेजिंग? 5 स्टेट का आदमी. हाँ. 5 स्टेट का आदमी एक्चुअली कंफर्टेबल अराउंड. एंड 2 दिन पहले मिले. I'm so happy. I'm so glad. I'm very happy when you were there. Oh, how You sweet. made me so comfortable with all these people. Oh, so sweet. I mean, it's all of them, not only me. It's Yeah, all of but them. you were the one who. Yeah. That I play the host all the time. सेम डोम आल्सो है. Yeah, same door. Same dog. एक्चुअली डायरेक्टर. Yeah, director. मैं हमेशा मानता हूँ कि it takes 2 हाथ ताली बजाने के लिए. So I don't take all the credit. It's always the people around also. And ये Zostel में ये होता है basically. So you meet this. All states. ये कहाँ भी नहीं होता है. मतलब बहुत कम जगहों में ऐसा होता है कि you're sitting with multiple लोग. And where do you get to do this? Never. You don't get to do this. By the way, guys, आज हम shopping गए थे लाल बाजार. This lovely sweatshirt I'm wearing, this is actually gifted From my friends. Here, my new friends here. क्या हमने क्या किया? हमने ना सब एक दूसरे के लेके गिफ्ट लिया जाने के पहले. So they bought me this and I love it. I'm tripping on this. And पीछे by the way, Shubham, please help me. Hold the camera. पीछे. It's nice. कुत्ते का बम और सामने शक्ल. मेरा भाई मुझे प्यार हो गया इससे. ये love it. It's a चुम्मा. हमने सब्यसाची जो हमारा डिजाइनर है उसके लिए भी गॉट अ नाइस. इधर पास में हुडी एंड अगर स्ट्रेस होगा तो वो बॉल दबा भी सकते हैं पीछे ना ऊपर. And for a lovely lady here, what we get you? We got you shoes. Fantastic. ये ले पिंक कलर के. Fantastic. Do you like it? अरे ये भी है. हाँ बे साले ये भी है. ये this black sweatshirt also. हाँ हुडी. There you go. He didn't get me anything. बंगाली रैपर बन गया है. Awesome bro. तो या दैट्स व्हाट वी डिड. पहली बार किया है पूरे मेरे जोस्टल का ट्रिप में जितना भी है. एंड इट वाज गुड. इट वाज गुड. नाइस बॉन्डिंग एक्सपीरियंस. शुभम, यू मिस्ड आउट. बट अगर तू कोलकाता आएगा, आई प्रॉमिस यू विल गेट यू समथिंग ब्रो. समथिंग वेरी स्पेशल. या अगर आया तो लालच दे दिया अब तो आना ही पड़ेगा. Fantastic guys, thank you for making this trip memorable. I've been traveling for almost 30 days now, so every place has been fantastic and memorable, and a lot of credit goes to all of you and everyone who's there. वहाँ बैठे हैं सबसे दोस्ती हो चुकी है. बट वो अलग, वो कुछ कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं.
they'll join us in a bit, we'll join them in a bit. ऐसे ही हो रहा है पूरा. So 30 days and counting, guys. I have a long trip to go. Wish me luck. All the best. Thank you so much. I will see you guys very soon. Hopefully. अभी रात खत्म नहीं हुआ है, but I will see you guys. बैंगलोर तो मैं आ रहा हूँ, हैदराबाद MP भी आ रहा हूँ. यार झारखंड मुझे प्लान करना पड़ेगा. प्लान करना पड़ेगा. I'll have to plan, but धोनी से मिलवा देगा. हाँ धोनी. Okay, anyway, वीडियो लंबा हो रहा है guys. Cutting it short, fantastic. We gotta get back to this. बहुत important है ये. तो वो करने वाले हैं. And I will catch you in the next episode, guys. See you. Bye. Awesome, bro. Awesome. चलो, back to the game. The next few days were all about exploring the beautiful hillside streets of Gangtok, chilling with the street dogs of Gangtok, and dancing away the nights at some really wicked nightclubs. All in all, जो मैंने यहाँ 2-3 दिन रहने का plan किया था, turned out to be 9 days of some of the best memories I made with the new friends I made here. ये था सिक्किम का जादू. And this is what bikepacking solo is all about. आप ड्राइवर हो जी? अरे नमस्ते. नमस्ते. आप फेमस हो गए अभी जी. थैंक यू. 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स आपको हाय बोल रहे हैं. थैंक यू. तो बताया मैं क्या डायरेक्टर आ रहे हैं. अरे ही इज वेरी एक्साइटेड. Gangtok से निकलकर I made my way to Siliguri, my pit stop before Guwahati, Assam. Thank you so much for watching, guys. I will see you in the next one. Ride safe, be safe. You won't remember me when you're watching this. I will remember you. I'm also like Zostel. I'll call you after 25 days.